वेंकटराम सर, सबसे पहले गुड आफ्टरनून और बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी बाजार पर। एंड ऑब्वियसली नंबर्स पे चर्चा करेंगे। इंटरेस्टिंग नंबर्स हमने देखे इस बार कि जब एनपीए को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं हुई है, लेकिन मैं देख रहा हूँ हमने एनआईएस देखिए या हमारा प्रॉफिट देखिए, वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखाया है। तो सबसे पहले तो आपने कैसे नंबर्स को देखा, उसके बारे में ही चर्चा की शुरुआत करते हैं सर। Okay, good afternoon and धन्यवाद. Thank you for having me in the show. Uh, आपने देखा होगा कि हमारा परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली रोबस्ट ग्रोथ डिलीवर किया है, सस्टेन्ड प्रॉफिटेबिलिटी और एसेट क्वालिटी हैज बीन वेल मेंटेन्ड. Also the distribution reach जो है हमने expand किया है. They have also added new branches in Q1. So if you look at it in comparison to last year Q1, very healthy growth, strong start to Q1 of FY24. Profit parameters, ROE, ROA, up जो भी parameter ले लीजिए, we have done quite well compared to Q1 of last year. So the way I would sum it up is to the quarter. डेफिनेटली सर। वेंकटराम सर, अब मैं समझना चाह रहा था बिकॉज हमारे मार्जिन्स अगर हम देखने जाएं तो उसमें एक स्टेडी स्लोनेस देखने मिली है। इंटरेस्ट रेट्स अब स्टेबल हो चुके हैं, या तो कहें कि अब ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट आता हुआ देखने नहीं मिलना चाहिए। ऐसे सिचुएशन में व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस फॉर निम्स, बिकॉज उसको थोड़ा सा अब ग्रोथ लाने के ऊपर आपका फोकस रहेगा यहाँ से आगे। जी, निम्स के बारे में आपको जब हमने Q4 का जब गाइडेंस दिए थे, हमने बताया कि FY24 निम्स का जो ट्रेजेक्टरी होगा हमारे लिए कि इट विल बी अ केस ऑफ टू हाफ्स. फर्स्ट हाफ में थोड़ा सॉफ्टनेस होगा, प्लेटो, एंड देन इट विल स्टार्ट पिकिंग अप फ्रॉम सेकंड हाफ. So it's in line with what we had indicated. And इसके हिसाब से because cost of deposits has been higher than the yield on advances जो Q1 में हमने जो देखे हैं. But आपको you will also notice that with the interest rate hike now kind of plateauing or not, there's no expectation of further hikes and rates being where they are. We don't expect the deposit cost hike to go up significantly from here on. And we are able to kind of start pricing the assets also relatively better than what we were doing earlier. So what our expectation is in Q2, we should start seeing some bit of margin expansion coming through. और Q1 में जो देखे हमने वो हमारे ख्याल से वो शायद बॉटम है मार्जिन्स का. 5 to 7 बिप्स का मार्जिन इम्प्रूवमेंट उम्मीद है हमें कि Q2 में it should come through in Q2, and then from there on it should steadily start going up. And having said that, I'm sure you would have noticed that there's been very strong growth momentum which has come in this year as well, both on assets and on the liability side. 21% on the asset and 17%. So, and sequentially also, if you see quarter on quarter, 21% on both assets and liabilities on a year-on-year basis. But what is important to notice is sequential growth of both assets and liabilities have been very strong. 5% on assets and 4% on the deposit side. But हमारे हिसाब से यह है कि deposit का pricing, whilst the competition intensity है वो कम नहीं हुआ है, but pricing हमारे हिसाब से बहुत ज़्यादा तो नहीं बढ़ेगा from here. डेफिनेटली, तो इसके ऊपर हमारी नज़र रहेगी। ऑल्सो हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से मानसून वगैरह का एक सिचुएशन रहा है सो फार, तो देखने मिला है कि अबव एवरेज, या तो कहें कि कहीं कहीं पे तो बहुत ज़्यादा भी हुआ है। ऐसे सिचुएशन में एग्री लोन पे या रिटेल पे आपको लग रहा है कि कुछ असर आता हुआ देखने मिल सकता है बिकॉज ऑफ मानसून? Very early to say whether there'll be an impact यस। on the retail because of the monsoon. There are quite a lot of other parameters also which come into play because of the uneven distribution of monsoon. So what we have to be mindful and watchful is also of the inflation trajectory. While retail inflation has inched up a bit in the last data point, but I'm sure RBI takes into account the sustainability of how the rate, the inflation is, and then
So we have to watch out for data points on inflation, monsoon, variability across the country, because like you rightly said, some regions have received very heavy rainfall, some of them have received less, and there is reports of some regions having delay in kharif sowing. But in my view, it's too early for us to worry about what impact it will have on agri loans. But the best part for us is we have a very diversified book. If you look at our book, there is no one single business which is kind of the only driver, or the main. It is well diversified between retail and wholesale in 55-45. Even within retail, there are 4 or 5 business lines, each of them contributing quite handsomely to the growth. Similarly, on the corporate wholesale side, corporate and commercial banking. So the advantage of running a diversified portfolio comes into play when there are uncertainties of this nature, which may affect some part of the book, but overall we don't see it as a matter of concern at this stage. डेफिनेटली सर, ये सारे मुद्दों पर हम ज़रूर नज़र रखेंगे। वेंकटराम सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी जानकारी देने के लिए। थैंक यू सर।